Hello and welcome. You're watching Business Today Television. I'm Sakshi Batra and this is your favorite show, Daily Calls, a show that answers all your stock-related queries. In case you're here for the first time, the WhatsApp number is flashing on your screens. This is where you send me all the queries that you have about the stocks in your portfolio or onto your watch list as well. You can also log on to our YouTube channel, that's Daily Calls on Business Today Television. Go on to the comment section and send me some of your questions. I'll be happy to address that with our top guests who will be joining in on the program today. Of course, before welcoming our guests on board, let me quickly check the markets because that's important. 222 points of a fall, not looking good. It's turning out to be a Freaky Friday. We have also given up 24,900 after testing 25,000 on the lower end, and we are right now trading at the day's low. There's a 0.9% of a fall on the Nifty right now. When we also look at the other pockets in the markets, most of the sectors are down, barring just pharma, which is managing just about a gain of about 0.2% higher in trade. But look at the media stocks that are down by 2%. Small cap index is down by 1.8%. So the pain is turning even more painful for the broader markets. You can see the metals, PSU banks, mid caps, autos, even the IT and financial services spaces. At least there are 8 to 10 stock indices that are down by over 1% in trade today. So the market sentiment is extremely weak at this point. On the Nifty, again, there are a handful of the names that are still holding up in trade. To name a few, about 6-7 stocks that are still holding up with the gains. Rest of the stocks have all slipped. SBI Life is the top mover, Dr. Reddy's, Apollo Hospital, Sun Pharma. Pharma space is the only saving grace. You can see even Bharti Airtel managing about 0.2% up move, and life insurance majors, both SBI Life and HDFC Life. On the downside, it's Bajaj Finance. After the earnings, 5.5% lower. Shriram Finance, Bajaj Finserv, IndusInd Bank, even Bajaj Auto and Adani Enterprises, they're down by over 2% as well. And that's how the market sentiment is turning. Let me quickly welcome our guest on board. Mr. Kush Kodasara, market expert, is joining in on the program with us. Hi Kush, warm welcome. Good to have you with us on the program. What do you make of this sharp weakness in the markets today? Testing of 25,000 on the lower end, testing of 24,900 on the lower end, and seems like we are inching closer to 24,800 now. What's happening? Good afternoon, Sakshi. Definitely, if you remember last time when we met on last Friday, I had mentioned that unless and until we trade about 25250, market is looking weak, and we made exactly high at 25246 this week. Of course, plus or minus 1% is fine, but overall, if you look, 25250 was a strong resistance, and I'm sure that this is just the beginning. It's what I feel because if you look at the weekly charts, we are seeing the lowest levels in last 3 weeks. So I think Nifty has already given a breakout on the downside. Now the last support would be 24,750, which was acting as a strong support before in the last rally. So of course sentiments are still weak, but you may expect some support at 24750. But if that break, I'm waiting for 23,800. Okay, got that. Let me quickly take some queries that are coming in, Kush, and then we can again come to the broader discussion of the markets. The first question that we have is from Gul. She's from Kerala and she's sending a question on our WhatsApp. She says, I love this show. It's a very helpful show for all of us retail investors. Thanks a lot, Gul, for writing in such appreciative words. The question is on PNB Housing. And she said that she purchased this stock at 1038 for a 1-year time frame. What exactly is the price at which she can continue to add and build more positions here? PNB Housing at 1010. Today it's down by about 4%, but earnings had also come out pretty promising. How would you look at this one? So definitely, technically, I think we are breaking down on BNB housing. So if we have bought for a year or so, maybe it would be difficult for you to make money because I think first we are going to test 900, after which we may turn around or maybe we can even go below 800 level, which was low of this calendar year. So currently, technical structure is looking weak. Fundamentally, also, I believe Sakshi NBFC sector, non-banking sector, financial sector is looking weak. I think a lower interest rate would lower the NIMs, so that would be a little bit of impact. And also, housing finance, I believe, rising cost of real estate. Plus, today morning I was reading there was 72% cut down on hiring from IT sector, from big six, top six companies. So
the main real estate sector, which is uh, by IT employees, is going down. So I think PNB is going to hit fundamentally too. So avoid for 1 year horizon. You can exit and book minimum loss. I think it would be better to sit on a sideline or be in cash. Okay, got that. Let's look at some of the other questions that are coming in. We have this next question. This one is from Sai from Hyderabad. Sai says, I have some extra cash. I want to know whether stock markets is where I should invest or should I invest in gold right now? That's the key question. Kush, you have constantly talked about both on our program. Of course, the markets have been consolidating now. Gold prices have also climbed down from their all-time peak a little bit. But how should one really decide? Equity versus gold. What will give us more money? So for short term, if he's looking, I would suggest to buy gold bees as of now. Avoid investing in equity market. I think gold will outperform in coming 2 to 3 months. So by Diwali, we may review the strategy again, and then maybe we can shift back to equities when we are seeing lower levels. So I suggest don't sit on cash. Buy gold bees. Gold have corrected almost a percent or two since the Monday high, but I think we may see a U-turn and we'll see a new highs in the coming weeks. So buy gold bees as of now. Maybe after a month or so, maybe you can review with us every month. When it will be the right time, we'll switch over back to equity asset. Okay, got that. Well, let's also take some other questions that are coming in on our YouTube now. We have a lot of questions and people joining in. Rahul Singh, Munish Gupta, Amir Ali. We also have Vaibhav joining in on the program with their questions. So, welcome to all of you for starting in early and sending us all your questions there. We'll definitely take all your queries. The question is from Vaibhav Sharma today. He says, नमस्कार साक्षी मैम, मेरे पास अरविंद फैशन के 1000 शेयर्स हैं, 511 पर खरीदे हुए हैं. इसका मैं टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाहता हूँ. श्योर वैभव, आपके सवाल को डेफिनेटली हम एड्रेस करवाएंगे कुश जी से. रिटेल टेक्सटाइल स्पेस खास तौर पर इन्होंने चुनी है और अरविंद फैशंस के ऊपर जानना चाहते हैं. होल्ड करते हैं पोजीशन 511 के लेवल पर, तो थोड़ा नीचे ज़रूर आ चुका है अभी इनके लेवल से. लेकिन जिस तरीके से अभी यूके के साथ एफटीए साइन हुआ है कुछ, तो टेक्सटाइल स्पेस के ऊपर काफ़ी फोकस है कि शायद एक्सपोर्ट्स के लिहाज से जो इनकम्बेंट प्लेयर्स हैं इंडिया के, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आए vis-a-vis अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश और वियतनाम दैट आर नोन फॉर exporting a lot of textiles. Arvind Fashions, technically also, do you think there will be any move here? Definitely, I believe yes, fashion segment is going to benefit from the this tariff war or maybe tariff cut. But I think Arvind Fashion technically is looking for some downside correction because domestically we have seen a slowdown in retail segment. Maybe yes, export market is not that huge for this company as of now because we know that Arvind Fashion holds many franchises of foreign brands in India. So I believe currently we will see some correction on the stock. Yes, for longer term, I think this stock is good, but wait for some correction. I believe 440 is the level which I'm expecting on Arvind Fashion, where we can review it and buy again. So exit if you have bought it, we'll review it around 440 and enter again. Okay, got that. Let me take another one then. This one is from Amir Ali. He says, मैम NHPC में क्या करें? 1000 शेयर्स हैं मेरे पास, 96 के भाव पर खरीदे हुए हैं, 1 साल से ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है. अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली पिछले 8-9 महीने तो एक तरीके से मार्केट्स के लिए काफ़ी बड़े कंसोलिडेटिव फेज में थे. पिछले साल 2024 में समर्स के दौरान एक टाइम आया था जब सभी पावर स्टॉक्स ज़बरदस्त रैली दिखा रहे थे. उसके बाद एक कंसोलिडेशन. अब 1 साल से जिन्होंने पीक पर होल्ड किया हुआ है वहाँ पर कोई रिटर्न देखने को मिले नहीं है कुछ. अब क्या करें? डेफिनेटली एनएचपीसी में कोई रिटर्न नहीं मिला है. सो आपने सही बोला है कि पावर सेक्टर का जो मोमेंटम था लास्ट ईयर वो थोड़ा फिजल आउट हो चुका है. वन ऑफ द रीजन तो है ही वो. सेकेंड रीजन एनएचपीसी के लिए मुझे स्पेसिफिकली लगता है वो पहले से लो बीटा स्टॉक था, बट इट इज अ गुड डिविडेंड पेइंग स्क्रिप्ट. हमको पता है कि ये गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है. तो मैं ये आपको ये राय दूंगा इन्वेस्टर को कि अगर ये आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, आप 2-3 साल होल्ड कर सकते हैं, तो प्लीज होल्ड कीजिए. लॉस बुक करने की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली थोड़ा नीचे आएगा स्टॉक, बट आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा. सो और पावर सेक्टर मुझे लगता है आने वाले 5-7 साल में काफी ग्रो करेगा, क्योंकि इंडिया का जो विजन है कि 2030 तक
हर गांव में बिजली होनी चाहिए, चाहे वो रिन्यूएबल से हो या थर्मल से, तो सब पावर रिलेटेड कंपनीज परफॉर्म करेगी। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा, होल्ड कीजिए 2-3 साल के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास ये सवाल आया है और ये है मोहित का, लुधियाना से। ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून, आई हैव 500 शेयर्स ऑफ रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, दैट्स बर्गर किंग, एट द प्राइस ऑफ 106। माई टाइम होराइजन इज 3 years, व्हाट इज द सजेशन हियर? तो QSR स्पेस से इनका फोकस है। बर्गर किंग एक बहुत ही पॉपुलर चेन है। स्टॉक वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म हमने नहीं देखा है स्टॉक में। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर भी करें बाकी जो कुछ स्टॉक्स इसी ग्रुप के हैं या QSR स्पेस को बिलोंग करते हैं, बाकी कुछ कुछ स्टॉक्स में आपने मोमेंटम डेफिनेटली देखा है, लेकिन रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया में ये थोड़ा मिसिंग भी रहा है। 3 साल का इनका व्यू है, कुछ कहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट नजर आता है? मुझे लगता है डेफिनेटली आपने राइटली बोला है, बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये सब जो QSR चेन्स है इंडिया में, मैं डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जो अभी भी इंडियन सोसाइटी है, इंडियन रिटेल कस्टमर का जो एक ड्रॉबैक है वो है लॉयल्टी नहीं है। आज यानी मुझे अगर KFC पसंद है तो मैं KFC खाऊंगा, ऐसा नहीं है। यानी जो बाहर की कंट्रियों में होता है, यहाँ पे जो ऑफर अच्छी होती है, ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ, वो मोर देन 60% पब्लिक का यही सोच है कि जहाँ पे सस्ता मिलेगा वहां पे जाएगा। तो आज अगर KFC सस्ता है तो वहां पे जाएंगे, कल बर्गर किंग सस्ता है तो वहीं पे जाएंगे, मैकडोनल्ड्स जाएंगे। तो मैं ये सब ब्रांड्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई वुड रादर सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन इटर्नल, जो डिलीवरी करता है। आज कुछ भी हो, इटर्नल को तो पैसे बनेंगे, या स्विगी स्विगी में पैसे बनेंगे। सो आई वुड सजेस्ट डोंट इन्वेस्ट इन brand particularly, not even Jubilant. I would suggest to invest in Swiggy or Eternal, which delivers this food. ओके, रादर देन QSR स्पेस फूड डिलीवरी पर फोकस करें, इटर्नल या स्विगी, इन दोनों स्टॉक्स में ज्यादा पैसा बनेगा 3 साल में, तो आप यहां पर अपना फोकस रखें जहां पर बेहतर प्रॉफिट्स आपके बन सकते हैं। आई होप दिस हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन वेल। लेट्स टेक सम अदर क्वेश्चंस कमिंग इन। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर्स अगेन। This is Akhilesh, and he says, hello ma'am, good afternoon, how are you? I'm very well, Akhilesh, how are you? The question is, in fact, he says, thank you so much for taking my questions on your show. Thanks a lot, Akhilesh, for sending in your query. This is a show for all the retail investors who want to get professional help and who want to seek, advice from top market experts who are registered with SEBI to get, the perfect advice whenever they feel stuck. So don't fear, whenever you feel like asking a question, please go ahead. We have created this show only to help all the retail investors and shareholders of the stocks as well. Let's quickly find out what his question is. This is NBCC. That his question is on. 100 shares is what he has, Kush. The price is at 111 rupees. And the other one that he is asking is Trident, 200 shares priced at 33. He wants to know whether both these stocks can be accumulated on dips or not. Right now, NBCC is almost at the same level that he has bought it, 110 odd, and Trident also he bought it at 33 odd levels. Any suggestion? Trident moved up also today, quite a lot. Definitely. So I believe he's a long-term investor. Then I would suggest him. I'm not big fan of both of these stocks for long-term investment, because they are very much low beta. So if we talk about NBCC, in 2017 it was at around 97 level. Today it's at 110. So imagine in a span of 8 years, where Nifty has almost from in 2017 Nifty was around 8,000. Today it's at 24,000, 300 percentage rise in index. But NBCC has not given any even close to that return. So if you're a long-term investor, I would completely avoid NBCC. I don't think it's a good stock to hold. Same goes with Trident. I think Trident is also not outperforming even the benchmark index. So if you look at the stock price in 2022, it was at the same level. So I think you should avoid long-term investment. So exit NBCC at current price. For Trident, maybe technically it is looking good for short term. Maybe you can exit around 40 level mark in next 2 to 3 months. So exit NBCC right now, and maybe hold Trident with the stop loss of 31. When it's at 40 mark, review it again and we'll exit then.
Okay, got that. I hope this has answered your question. YouTube पर मुनीश गुप्ता का सवाल आया है, ये लिखते हैं एक हॉस्पिटल स्टॉक कुछ सर आप इनको बताएं जिसमें ये सिप कर सकें और अगले 10 साल तक के लिए लगातार निवेश कर सकें हॉस्पिटल स्टॉक में से, तो वो स्टॉक कौन सा होगा? डेफिनेटली अगर आपको शिफ्ट करना है तो फार्मा स्टॉक में हमेशा मैं बोलता हूँ, एनीथिंग रिलेटेड टू फार्मा, डायरेक्ट स्टॉक्स में मैं शिफ्ट एडवाइज नहीं करता हूँ। आई वुड एडवाइज डू अ शिफ्ट इन टाटा फार्मा फंड, जो थीमेटिक फंड है। मैं खुद ये सब क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पता नहीं होता है 10 साल पहले अगर आप इन्वेस्टर हो और 10 साल पहले पुराने इन्वेस्टर हो तो याद होगा वोकार्ड कितना फेमस स्टॉक था ट्रेडिंग में, 1100 1200 जाता था, नीचे आता था, बट आज उसका इतना नहीं है जितना अपोलो हॉस्पिटल का है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, लेके भूल जाना है, तो बेटर कि था टाटा फार्मा फंड में निवेश कीजिए सिप के द्वारा, आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे और सेफ रिटर्न मिलेंगे। Okay, so that's a very good suggestion that you have got, and I hope all the viewers are also listening in as well. So, what Kush is trying to help you out understand is that it's very difficult if you have a 10-year time frame to really find out whether there will be a consistent performance from a stock for as long as 10 years period. Rather, a fund investment, a passive investment can actually reduce your risk and exposure to one stock, but distribute it and yet at the same time continue to play the long term story of pharma that it will have. So definitely look at the fund that he has recommended, Tata Pharma fund, that you can probably invest in for a long term, a 10-year time frame that you may have. Let me quickly also look at some other questions. Okay, Atul from the same space, he has asked a question from the healthcare space. Atul says, can you please give me a view on Fortis Healthcare? I bought 15,000 shares of this one at 178, and my question is when and at what price should I exit this one? First of all, Atul, huge congratulations to you for investing in Fortis Healthcare at 178. You also have a good quantity of 15,000, which means that your returns are multifold and you are celebrating all those gains as of now. Now the question is, when should I exit? And I think that's the most difficult question that all the viewers always face, because you keep on thinking that the stock can actually go higher, keep on giving you higher returns when you're sitting on such massive pool of profits. But what would you advise, Kushia? So definitely, it's always difficult to advise someone to exit when they are in profits. I mean, they will regret it, and if it goes up, if it goes down, then it's fine. So what I suggest always to my investors is to play safe. So, for example, he is making 7x on this money. Maybe this stock might go up to 2,000 or 3,000, but I would suggest you book 50% of your profit. So you will at least recover your capital plus interest. I mean, your main money. Rest 50% you forget. So I would suggest, if you play safe, book 50% of your quantity right now. Keep it in a liquid plan. If you want to stay invested in pharma sector, as I mentioned before, that capital can be used to do SIP in the Tata Pharma fund. So indirectly you are still with the sector, but you have booked profit and paying some safe and diversify. So I would suggest to book 50% quantity, keep that in a liquid fund, and every month you can do systematic withdrawal and then invest same into Tata Pharma fund. Okay, fair point. I hope this has also answered your question well. Let's take some WhatsApp related questions that we are getting. This one is from Satyan. He says, good afternoon. Good afternoon to you, Satyan. The question is on MGL, Mahanagar Gas. He says that I bought this stock last month. The price at which I bought it is 1490. I wanted only a short term profit on this one, but the stock has gone down. So I want to know whether I should continue to hold on for 1 to 2 months or shift to any other stock like a Transformers and Rectifiers India. What will be a good strategy to make short term returns on a stock? Well, first up, I think, Satyan, it's always very important when you have a short term time frame to have stop losses in place as well, which we usually forget. And then what happens is we keep on making the short term view a long term view till the time we keep on getting the profits, or we keep on waiting for endless time for profits. Let's find out from Kush whether there are any suggestions over the next 1 to 2 months time frame that the stock can actually give you good returns, or will there be a better strategy that you should adopt here? Kush.
Definitely, MGL or this sector is looking promising for a long-term bet. I mean, who wants to invest for 10 to 15 years? The reason is that slow and steady. Still, there is untapped market where piped gas line has not reached many rural areas, even metro cities. So definitely, city distribution gas sector is looking good for me for long term. For short term, as you rightly mentioned, first rule is always to keep a stop loss. It's I know it's very hard to book losses, but you rightly mentioned, but now you have not kept a stop loss. So if I suggest you to book loss, I would suggest if you're a short-term trader, exit MGL. Definitely, it's difficult to book loss and invest in liquid plan right now because overall I'm witnessing, I'm expecting some downfall in the markets in short term. So you will have a trigger of stop losses, many stop losses. So it's better right now for a short-term trader to sit on the sidelines. So book loss on MGL, buy liquid Bs, which is on the ETF platform. You will make some 6% return pro rata. We will invest again for short term around Diwali. Okay, got that. I hope this has answered your question. Let's take another one. This one is from one of our viewers, Lalit. He is from Hyderabad. He says, "Hello, ma'am. I need an overview on the newly listed stock Kalpataru Limited, and I want to know whether it is advisable to buy it at the current levels or not." Kush, you won't have the long term charts at all because it's a very recently listed company, but the stock had been in focus of late as well due to its performance and earnings. Your suggestion on Kalpatru at 405? Definitely, I think technically, you rightly mentioned we don't have so much history, but I would suggest to hold on for a long term. Definitely, right now you are witnessing some profit booking due to markets, but if you're a long term investor, stay invested. Maybe we can average it out on the downside. Okay, got that. Next, let's take a question from one of our YouTube viewers. This is 1-8. I guess the name has not been written, but you're writing 1-8. Maybe you're a fan of Virat Kohli. He had this on his jersey, and all his restaurants are also called 1-8 Commune. Do help us understand if you can share with us your name and your other details. The question is on Graphite India, and the question is I bought this at 590. Should I exit now? Graphite India, definitely, I would, if he's a long-term investor or short-term trader, you should exit Graphite India for once. I think tables are turned around today. You see, since last 2 days, it's on a sell zone. So definitely avoid Graphite India. I believe this stock could touch 500 on the downside. Okay, got that. Let's take another one. This one is from our WhatsApp. Rohit from Noida writes in. He says, "Hi Sakshi, I feel stuck in Bata, India. Since I bought 74 shares priced at 1320. Can you please suggest to me should I immediately exit or is there a rally on cards that I can potentially wait in this counter?" Definitely, I believe Bata India is on it's always a low beta stock for investment. So I would suggest to exit once. Overall FMCG, as we discussed, whether it's be clothing or any related to clothing, it's on a, slowdown. So I don't expect any quick rally in Bata India unless there is some unexpected corporate news. But I believe you should exit. Shifting to another stock, yet again, I won't suggest. But if you're a long-term investor, and you don't want to keep your funds idle, then from Bata India, you can shift to Tata India Consumer, which is also Tata Consumer, which is a FMCG, but they have given a good commentary after fundamental results. So definitely you can book Bata and shift to Tata Consumer, but only if you're a long-term investor, otherwise sit on the sidelines. Okay, got that. Let's take another one. This one is from Yashwant Kumar Garg. He's from Gurugram. He says, how do you see Kush sir Geo Finance share in this current financial year and what is your expected target on this one? Definitely. So, Geo Financial as a disclosure, me and my family is holding on a long-term basis. For short term, I believe this stock could come down to 275 to 80 odd levels. I'm sure they are going to do good business in future, but I don't believe in near term they are going to turn around the sector. So definitely, if you're a long-term investor, not for 1 year, but if you're looking for 2 to 3 years horizon, you should hold on to Geo Financial and even buy on every dip, but for short term or maybe to 6 to 8 months, I think it would underperform. Okay.
Let's take the next one. This one is from Shomalia Biswas. He's from Kolkata. He says, Hi Sakshi, I have 8 lots of Nifty 31st July 25,250 call option. Bought at 32 levels. I want to know about a stop loss and a target of this option. Should I hold it or not is also a question that he's asking. So 8 lots, Nifty 31st July 25,250 call option at 32. Definitely, exactly the same level which I mentioned as a resistance last week. He has bought the same strike price. So I would suggest I don't believe, at least I don't think we are going to cross over that level in coming 4 trading session unless Mr. Trump signs some good deal with India. So it's a little bit dicey, but 70 technically, if you look at the charts, I don't think your cost is going to come. I mean, 25 to 50 is too away from the current level. So I would suggest now, I think its current price would be around 12 or 15 rupees. So avoid, just hold it now. Maybe if you have some luck, you may see some profits. Okay, fair point. Let's take another one. This one is from one of our other viewers, and this is okay. This is Teja from Nellore. He's also asking on Trident again. 6,000 shares of Trident is what he has at 53. Wants to know, can I hold this stock for the next 10 years? Very difficult to take a call for 10 years perspective when each stock like this comes really, and especially when this has been an extremely volatile, a penny stock, also in the past. What would your suggestion be? So I would not suggest holding a penny stock for 10 years unless Yeah. there is growth story. So if you are a long-term investor, I don't know what's his portfolio distributed as. So I would suggest don't hold this stock for at least for long term. As I suggested, keep a strict stop loss at 30 rupees. If it bounces back to 40 by say next 3 to 4 months, we'll review and shift to some other good stock at that time. So currently you can hold for a stop loss, strict stop loss at 30. At 40 rupees, we will review it and then we can take a call. Okay, fair point. I hope this has answered your question. We'll take one or two more questions and then we'll jump to Kush's own choice of stocks as well. Venkat Satya from Andhra Pradesh writes in, he says, I really like this show, which gives a very good financial understanding of companies. Thanks a lot, Venkat, for writing in. He says, I have 81 shares of Sadhana Nitrochemicals. I want to know what is the future of this company. Well, the price is missing. Let me just quickly point out Satna Nitro share price at the current levels, 7 rupees. It's a penny stock completely. Move circuit to circuit. Last month 27% of a fall is what we've already seen. Last 5 days also, just look at it. It's actually moved from circuit to circuit. Let's try and understand. Why Kush investors always get attracted to such penny stocks. Is it at all a wise move to look at such penny stocks where one is difficult to find out that what are the fundamentals, and even the technicals are very, very difficult to understand whether any levels will be supported or not? What exactly would you say? So, what I would like to, what I have analyzed in my career is, initially we have learned when we were young, we have heard about stories about Ketan Parekh, 2000 IT bubble. That time, 6 rupees stock has converted to 6,000. But I want to, communicate this to all traders and investors that uh, time and that scenario is different. Now, SEBI has become more stricter. Now we have more technology which has been placed. There are more circuit filters. There is mechanism of surveillance. You won't, make quick money in such stocks 600x or 700x in a year. This Insta stories and AI videos is, giving false hope to the retail traders, and they invest huge amount in this, penny stock. You should take a risk, but not more than 2% of your total portfolio. So I would suggest don't buy such penny stocks. It's your hard-earned money. Rather, play safe and think about your future or maybe next generation. And you should first start investing in, blue chip company. So I would give a simple example. You look at Tata Motors. If you're invested in 2020, 21 or 22, you are still making 5x. I mean, stock was at around 200. So you imagine you have 250, which was a resistance level. So if you are short on Nifty since last week, hold it. Book some profits around 24750. I would suggest fresh shots on Bank Nifty because we have just breached yesterday's low.
We are still away from last week's low. So there is some huge opportunity in Bank Nifty, but strict stop loss at 56,800 positionally on the future levels. On the downside, I believe we may touch 55,000 by coming week. Okay, got that. Kush, one more stock is stock query that's coming in specifically for you. So I will take that with you. This one is from Amit Soni. He says, Kush sir, I want your suggestion on Sika Interplant Systems. I have 100 shares of this one priced at 1475. Is it a good stock? Should I average or when should I book my profit? That's the question. I think you should book your profits. If you are, no, I am not looking at the charts also. I'm just suggesting you in this market, if you are making profits, at least book 50% if you even a long-term investor. I'm sure you will get your stock at 10% discount within next 2 to 3 months. If you don't get it, you will get some other opportunity, but you will regret it if you go down and if you haven't booked profits. So if you're a long-term investor, book 50%. If you're a short-term trader, book 100%. Okay, got that. Kush, thank you so much for being with us then on the program and helping us with all your views on the markets and, of course, detailing for all our viewers also what strategies they must be following on the stock queries that they've asked you and sharing with us your basket of strategies and stocks on the markets as well. So, thanks a lot. Appreciate your time. 222 points of a fall. So, the market is not budging with that move. 24,838 right now. Let's find out whether there is any sign in the second half of the trade that we may see of improvement. But Kush clearly says he is going to go short on the market right now, which means that he actually believes the market texture to weaken from the current levels as well. Let me quickly read up for you how the markets are poised. Just about a 0.1% move on the pharma stocks. Rest all of the sectors are down in trade. The market breadth is very, very weak. The sentiment is very, very weak across the board. There is a broad-based selling that you are seeing in the markets right now. Media stocks down 2.2%, 1.9% cut on small caps, metals down 1.5%, autos down 1.5%. You can also see PSU banks down 1.5% as well. We will also look at mid caps and small caps that are down, oil and gas that's down. At least when we look at, there are at least 10 to 12 indices that are down over 1 to 1.5% and even 2% in trade. Look at India VIX. That's the level that you should be watching out for. Pull up India VIX for viewers. 6.7% high at 11.4. That's the kind of spike in volatility that you're seeing at this point in time. Let me quickly look at welcoming now another guest on our program. We have Mr. Raghavendra Singh joining in on the show to help our viewers understand more about their stock queries. Another favorite on the program. Raghavendra, warm welcome. Good to have you with us on the program yet again. First, tell us, what do you make of this sharp sell-off in the markets? What are the key reasons? Sakshi, very good afternoon. As far as Nifty is concerned, we have seen a selling pressure across the market, whether it is heavyweight, whether it is mid cap, small cap, large cap. Everywhere we have seen a huge selling. The major reason, I think, the global market and the concern over the mid cap and small cap stocks. And apart from that, the heavyweight stock Reliance, the big boss. सो अब ये मतलब रिलायंस इतना नीचे आप देखिए 1470 रुपए से ऑलमोस्ट 1370 1380 तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज का फॉल एंड निफ्टी वाज देयर एट अराउंड 25,200 25,100 लेवल यस्टरडे. अभी यहाँ से जो नीचे दिख रहा है मुझे कि अगर ये हैवी वेट्स ऐसे स्लिप होते रहे तो वी कैन सी द एक्सपायरी बिलो 25,000 ऑन द मंथली बेसिस. ओके राघवेंद्र जी, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं तो पहले कुछ सवाल ले लेते हैं एक बार फिर से, फिर ब्रॉडर डिस्कशन पर आएंगे. 1400 से नीचे रिलायंस जा चुका है, अभी 0.2% नीचे है. हंसा शर्मा का सवाल आया है, ये मैजागॉन डॉक के ऊपर पूछना चाहती हैं आपसे. 3490 पर खरीदा हुआ है, करंटली लॉसेस पर हैं. अब ये बने रहें या फिर निकल जाएं ऐसे, ये आपसे जानना चाहती हैं. व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर ऑफ दिस स्टॉक? आई डोंट वांट टू ब्लॉक माय मनी in this stock right now. What exactly is the suggestion that you will give? 3490, almost 3500 पर खरीदा है. मैम देखिए ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत नीचे है, 500-600 रुपए नीचे आ चुका है. अगेन स्टॉक हैज ब्रोकन अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अराउंड 3000 लेवल, नाउ होवरिंग अराउंड 2900. सो अगेन आई कैन सी 27
90 इज ऑन द कार्ड, तो अब 100 रुपए और रुक सकती हैं तो रुक जाए, वरना 100-150 रुपए और नीचे है यहाँ से। If she can wait, then hold it with the stop loss of 2750. Okay, got that. Let's take another one. This one is from दिलीप देशमुख, ये पुणे से ही हैं और लिखते हैं, गुड आफ्टरनून साक्षी, आई नीड राघवेंद्र सर्स व्यूज़ ऑन पीटीसी इंडस्ट्रीज़। मेरे पास 10 शेयर्स हैं, 15,200 के भाव पर मैंने खरीदा हुआ है। यहाँ से आपको ये स्टॉक कैसा दिखता है? पीटीसी इंडस्ट्रीज एक तरफा काफ़ी मूव देखने को मिला था डिफेंस क्षेत्र में जब मूव आया था, अब उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा है ये स्टॉक, कैसा लगता है अभी आपको करंटली? देखिए, मुझे लगता है पीटीसी इंडस्ट्री अब यहाँ से एक रनअप के लिए तैयार हो रहा है, 14,400 के आसपास है। एंड अगेन आई थिंक ये स्टॉक यहाँ से बहुत जल्दी जो है 15,600 15,800 के लेवल पे जा सकता है। अगर इनके पास है तो ये होल्ड करें। देशमुख साहेब, तुम्ही होल्ड करा, मला असं वाटतं स्टॉक तो वरती जाणार 1,000 रुपीज, कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 14,100 14,000 लेवल। क्या बात है, मराठी में आपके लिए स्पेसिफिक राय जो आपको मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं देशमुख साहब आपको बढ़िया लगी होगी राघवेंद्र सर की एडवाइस आपके लिए, इसे डेफिनेटली फॉलो करें। नेक्स्ट हमारे पास सवाल यूट्यूब के जरिए वैशाली चौधरी का आया है। ये गुड आफ्टरनून कह रहे हैं। गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो वैशाली, गुड टू हैव यू विद अस ऑन द शो। द क्वेश्चन इज ऑन KRBL, चावलों की कंपनी है ये, और अगर देखा जाए तो 400 शेयर्स है इनके पास 410 के भाव पर, 2 से 3 महीने तक के लिए होल्ड कर सकती हैं। तो FMCG स्पेस में से राइस फोकस्ड कंपनी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड। मैंने 10 रुपए के लेवल पे 2011-12 में इस स्टॉक को लिया था, ये मेरा डिस्क्लेमर है। आज भी मेरे पास कुछ ये स्टॉक होल्ड है, 3-4 बार स्प्लिट बोनस हो चुका है। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, मुझे लगता है राइस एक्सपोर्टर सबसे अच्छे ये हैं। ईरान इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ईरान और पाकिस्तान। मुझे लगता है कि वो मार्केट अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को इनको होल्ड करना चाहिए। इफ यू कैन होल्ड इट, अगर 380-350 का लेवल आए तो मैम और ऐड कीजिए, बेचिए मत इस स्टॉक को, बहुत बढ़िया कंपनी है। क्या बात है राघवेंद्र जी, 10 रुपए के भाव से आपने लिया हुआ है और बहुत बार स्टॉक और स्प्लिट्स और बोनस का भी आपको फायदा मिला है। तो पहले तो आपके लिए ही बहुत बहुत बधाई कि आपने किस बढ़िया तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन अपने लिए किया। ऐसे ही लगातार जेम्स राघवेंद्र सर हमारे सभी दर्शकों के साथ भी शेयर करते रहते हैं डेली कॉल्स पर, तो इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी पूरे शो के लिए आप बने रहा करिए, क्योंकि किस मौके पर आपको कहाँ पर राघवेंद्र सर अपनी तरफ से एक टिप बता देंगे वो आपको डेफिनेटली ध्यान में रखनी है। और इस तरीके से आप बाकी सभी दर्शकों की जो सॉल्व हो रही हैं क्वेरीज, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो सभी दर्शकों के लिए ये जो 1 घंटा है ना डेली कॉल्स का, इससे आपको एक वैरायटी ऑफ स्टॉक्स के बारे में पता चलता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लगातार पूरे शो को देखिए और इसको एक अपना डेली का हिस्सा बना लीजिए। नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल, हमारे पास आया है राज का। ये संभव स्टील ट्यूब्स के ऊपर पूछना चाह रहे हैं, जो कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, 2000 शेयर्स है इनके पास, 145 पर लिया हुआ है। क्या ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी या नहीं, ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक तरफा चाल स्टॉक में दिखी और उसके बाद अब कंसोलिडेशन पिछले 2-3 दिनों से चल रहा है। तो जिन्होंने निवेश किया था IPO में, उनके लिए तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स बने। अब पूछ रहे हैं कि क्या करें आप? देखिए, मुझे लगता है ये स्टॉक अब यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, तो बिल्कुल इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अभी अभी नई लिस्टिंग हुई है, तो कुछ दिन तक तो ये रेंज में रहेगा, बट लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेशक हैं तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा लेवल है, बाई करिए। 155-160 का भाव दिख सकता है आपको बहुत जल्द। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल, हमारे पास आया है खास तौर पर एक हमारे दर्शक हैं जो यूट्यूब के जरिए भी हमें लगातार सवाल भेज रहे हैं। नैन्सी हैं, लिखते हैं कि हाय, प्लीज़ give your suggestion on Kelton Tech. Split shares haven't been credited yet, so even if I'm in profit, I cannot book it. Can you tell me how to go about it? Okay, Kelton Tech. पहले तो इस स्टॉक के ऊपर बताइए कि ये शेयर आपको लगता कैसा है, और ये जो लिख रहे हैं कि अभी तक जो स्प्लिट शेयर्स हैं मेरे पास आए नहीं हैं, तो प्रॉफिट भी अगर बुक करना हो तो अभी ये नहीं कर पाएंगी। 14% तक का जो मूव आपको देखने को मिल रहा है केल्टन टेक सॉल्यूशंस पे, उसी का एक रिजल्ट है। आप इस 77% ड्रॉप को मत देखिएगा, क्योंकि ये जो है अभी एडजस्ट होकर आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज अभी 14% ऊपर है ये स्टॉक। केल्टन टेक को कैसे देखते हैं राघवेंद्र जी आप? बिल्कुल मैम, देखिए मुझे लगता है अभी स्प्लिट हुआ है, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना है, स्टॉक अभी यहाँ से 36 रुपए तक जा सकता है, तो 4-5 रुपए का अपसाइड है।
अगर लंबी अवधि के लिए अगर आपको रखना हो थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे लगता है एक बार 28-25 के नीचे आएगा। बट शॉर्ट टर्म के लिए अगर 15-20 दिन का व्यू है तो 4-5 रुपए की रैली है, वो लेके आप बाहर निकल जाइए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर भी आपको राय मिल गई है। राहुल सिंह लिखते हैं, गुड आफ्टरनून साक्षी, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल्सो राहुल, हाउ आर यू? द क्वेश्चन इज ऑन कि मेरे पास शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं 227 के भाव पर। अगर अगस्त तक का लिए ही व्यू लेना हो, यानी कि मान के चलते हैं 1 महीने का व्यू अगर इनका हो, तो क्या करके चले शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में? मैम मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं लग रही है, मुझे लगता है इनको अवॉइड करना चाहिए स्टॉक, या एग्जिट करना तो एग्जिट कर ले, क्योंकि कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। बहुत होगा 5-6 रुपए की रैली मिल सकती है, 228 तक की रैली मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं। तो मेरे लिए फिलहाल अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल अंकुर मोदी का है और ये लिखते हैं, प्लीज राघवेंद्र सर गिव योर व्यूज ऑन सेजिलिटी एंड ऑल्सो अनंत राज फॉर लॉन्ग टर्म। अनंत राज में तो आज भी तेजी थी क्योंकि नतीजे अच्छे आए, उसके बाद एक मोमेंटम दिखा। सेजिलिटी के ऊपर कई बार राघवेंद्र सर हमारे चैनल पर बता भी चुके हैं अपने व्यूज। अंकुर मोदी के लिए अभी फ्रेश व्यूज क्या हैं आपके पास? देखिए ये करीब 38-39 रुपए के आसपास था, तभी मैंने कहा था 2-3 रुपए की रैली इसमें है, देख सकते हैं। अभी ये रेंज में रहेगा, तो अंकुर साहब अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, बेचिंग नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी कोई रैली नहीं है, 45 रुपए के ऊपर अभी नहीं आने वाला। दूसरा अनंतराज ने बहुत अच्छे दिए रिजल्ट और स्टॉक भी आज काफी अच्छा ऊपर है, तो मुझे लगता है कि 600 रुपए के ऊपर जा सकता है। ऊपर जो है थोड़ा जाके सप्लाई आई हुई है, बट मेरे हिसाब से फिर से एक बार जो है मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, 620-625 का भाव आ जाएगा, बाई करके होल्ड कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं राघवेंद्र जी राहुल बल्वे का, ये पुणे से है और लिखते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स और फिनोटेक्स केमिकल्स दोनों में से सर शॉर्ट टर्म व्यू पे आपको कौन सा केमिकल शेयर पसंद है? मुझे लगता है कि इनको चंबल को छोड़कर के फेनोटेक्स को लेना चाहिए, वो काफी अच्छी कंपनी है, वहां पे जा सकते हैं। चंबल जो है थोड़ा ब्रांड नेम है, हर किसी के पास है, तो उसमें उतना बड़ा मतलब रनअप नहीं आएगा, तो वेट करें, तो चंबल के लिए दूसरी कंपनी बाई करें। ठीक है, ध्रुव त्यागी लिखते हैं, हाय साक्षी, हाय ध्रुव, हाउ आर यू? द क्वेश्चन इज ऑन श्रीराम फाइनेंस। ही हैज 100 शेयर्स ऑफ श्रीराम फाइनेंस इन हिज पोर्टफोलियो एट 694 ऑड लेवल्स। आज नीचे है क्योंकि पूरा एनबीएफसी स्पेस ड्रैग हो रहा है बजाज फाइनेंस के नतीजों के बाद। श्रीराम फाइनेंस को आप कैसे देखते हैं? 694 पर खरीदा है, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। 695 पे लिया है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन होल्ड करें। 650-620 आए तो और ऐड करें, 600 का स्टॉप लॉस दें। लंबी अवधि के लिए अगर आप चाहें तो उसको होल्ड करें, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा बिजनेस है, EBITDA बहुत बढ़िया आया था पिछले बार। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल इसको जो होल्ड करें। बहुत ज्यादा इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। 655-660 का भाव दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं और ये हमारे पास सवाल आया है जय रमी रेड्डी का। लिखते हैं मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ इन्होंने खरीदा हुआ है, इनफैक्ट एनएफओ से लिया हुआ है, और अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर अब परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो मैं किस तरीके से आगे बढ़ूँ? जी हाँ, जब आपने ये डिफेंस इंडेक्स जब ये एनएफओ लॉन्च हुआ था तब से देखें तो डेफिनेटली एक पीरियड आया था जब डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी, तो तब यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद काफ़ी अरसे का स्लो डाउन, फिर अभी दोबारा जब मूवमेंट आया, कुछ आपको मूवमेंट दोबारा दिखा होगा, लेकिन अब एक बार फिर से कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है। तो इस फंड में अगर जिसका भी निवेश है ये कैसे आगे बढ़े? देखिए साक्षी, मुझे लगता है अगर इसमें से निकाल सकते तो निकालिए, कि और साल भर 1.5 साल का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी डिफेंस स्टॉक में बहुत बड़ी अपसाइड की रैली नहीं, इनकी ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली आ चुकी है। बहुत होगा तो आपको 10-12% मिल सकता है। बेटर है अगर आप सिल्वर ETF में जा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हूँ, गोल्ड डायमंड बिजनेस में हूँ, आप जानते हैं मेरा जो है ऑलरेडी स्टोर्स हैं ज्वेलरी के। तो आपको अगर जाना हो तो सिल्वर जो है ETF ले लीजिए, वहां ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए अगला सवाल भी ले लेते हैं और ये सवाल हमारे पास है संदीप जैन का, किशनगंज बिहार से। ये BSC के ऊपर आपसे पूछ रहे हैं, 100 शेयर्स हैं, 2530 के भाव पर लिया हुआ है, अब क्या करें ये जानना चाहते हैं। देखिए कैपिटल मार्केट्स के ऊपर एक बार फिर से फोकस आ रहा है। NSDL का IPO आने वाला है 30 जुलाई को, और इससे पूरा क्षेत्र जो है एक बार फिर से फोकस में आएगा, खासतौर पर CDSL आएगा। आज भी BSC पर वीकनेस है, 3% तक के आसपास की, खरीदा हुआ है 2530 पर, क्या करें? देखिए होल्ड कीजिए, मुझे लगता है इसको बेचने की राय नहीं है। 2250 का बेस बना था, 2 बार वहां से ऊपर आ चुका है। अगर नीचे मिलता है थोड़ा, अगर आप और ऐड कर सकते हो ऐड कीजिए। 2430 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, मुझे लगता है इसको होल्ड करना चाहिए। 2700-2800 का भाव आपको 2-3 महीने के अंदर मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लेते हैं सवाल हमारे पास दीपक पटेल का है। ये पित्ती इंजीनियरिंग के ऊपर पूछना चाह रहे हैं आपसे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर व्यू हो तो कैसे आगे बढ़ें पित्ती इंजीनियरिंग को लेते हुए, यहाँ पर क्या आपकी राय रहेगी? फिलहाल अगर हम देखें 951 पर है ये स्टॉक। और देखिए मुझे लगता है स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है, बट थोड़ा सा अभी रेंज बाउंड है, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 900 के आसपास मिलता है तो बाई कर लीजिए। 1000-1500 का भाव आपको 3 से 4 साल में मिल जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। नेक्स्ट हम लेते हैं एक और सवाल हमारे दर्शक का। ये है अभिषेक झा, लिखते हैं ओमैक्स खरीदा हुआ है सर 105 पर, क्या करें अभी? मुझे लगता है स्टॉक में ज्यादा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप एग्जिट कर सकते हैं तो एग्जिट कर लीजिए। मुझे लगता है अब बहुत, क्योंकि 10 रुपए ऑलरेडी नीचे है तो आपका स्टॉप लॉस वहीं पे बन जाता है। अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फिर थोड़ा सा वेट करिए। मुझे लगता है कि जब बाजार सुधरेगा तो भी सुधरेगा। ठीक है, एक और सवाल आया सुधांशु महेश्वरी का, लिखते हैं हाय साक्षी। हाय सुधांशु जी, कैसे हैं आप? सवाल है इनका विंडलेस बायोटेक पर, और देखिए प्राइस पर किस पर खरीदा हुआ है इन्होंने, 224 पर खरीदा हुआ है। 5 साल तक के लिए और होल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बढ़िया प्रॉफिट इनको मिल रहा है। 982 के भाव के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है विंडलेस बायोटेक। कैसे देखते हैं सर आप इसको? देखिए स्टॉक ने तो बहुत अच्छा दिया है इनको, मतलब रिटर्न अब इससे बढ़िया क्या है। तो 25% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, पैसा अपना निकाल लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। अगले 5 साल और होल्ड करेंगे तो मुझे लगता है 2-2.5 हजार का भाव को दिखाई देगा। तो बिल्कुल होल्ड कीजिए, कोई इशू नहीं स्टॉक में। क्या बात है, कुछ 4-5 साल पहले इन्होंने खरीदा हुआ होगा और बहुत बढ़िया इनको प्रॉफिट मिला है यहाँ पर, और भी होल्ड कर सकते हैं। राघवेंद्र जी का मानना है यहाँ पर भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। ये सवाल है, ये सवाल का जवाब आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट नैना का सवाल है, ये संवर्धन मदरसन के ऊपर पूछना चाह रही हैं। 100 शेयर्स खरीदे हुए हैं 100 रुपए के ही भाव पर। देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, हम जानते हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, डिविडेंड पे ही कंपनी है, पेड बोनस। तो मुझे लगता है होल्ड कीजिए, 98 का स्टॉप लॉस दीजिए। अगर आप इसको और ऐड कर सकती हैं तो और ऐड कर लीजिए। मुझे लगता है कि आपको पैसा अच्छा देगा ये। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। यहाँ पर ये सवाल है निखिल अग्रवाल का। ये एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर पूछना चाह रहे हैं आपसे। 500 के लेवल पर खरीदा हुआ है ये स्टॉक, फिलहाल 473 पर चल रहा है। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, ये स्टॉक कैसा लगता है सर? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा इनको अभी अवॉइड करना, इमीडिएट ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे है। और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एवरेज करने की जगह थोड़ा वेट करें, जब स्टॉक का स्ट्रक्चर सही होगा फिर दोबारा ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में राघवेंद्र जी, कोई आपकी पसंद में स्टॉक आया, नजर में कोई स्टॉक आया अभी जो बाजार में गिरावट है, इसको देखते हुए कहीं फायदा लेना चाहिए क्या? देखिए 2-3 स्टॉक्स हैं, मुझे लगता है वहां पे एक बार एंट्री करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कल्याण ज्वेलर्स, ये कंपनी है। टाइटन, क्योंकि अभी जेम्स एंड ज्वेलरी कंपनी, मुझे लगा अभी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए बाई कर सकते हैं। ये 2 स्टॉक्स है। रिलायंस देखिए बहुत तेजी से नीचे आया, मुझे लगता है 1390 के आसपास है। 1380-70 आता है तो वो बाई कर लीजिए। और जिन भी स्टॉक्स के बारे में मैंने अभी तक बात किया वो सारे स्टॉक्स हम लोग अपने कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, तो आप भी अपने एडवाइजर से बात करके ये सारे स्टॉक बाई करिए। ओके, गॉट दैट। और एक सवाल तो आपसे पूछना ही है कि एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, आप क्या करने वाले हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए क्या आपने सजेशन दिया है? बिल्कुल, एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, धमाकेदार आईपीओ होगा। मुझे लगता है इन्वेस्टिंग गेम के लिए किसी को अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करें। अगर लंबी अवधि के लिए भी होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा ये अगले 2 से 3 साल में। क्या बात है, मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा अगले 2 से 3 साल में। धमाकेदार आईपीओ होने वाला है, तो इसमें डेफिनेटली सब्सक्राइब की राय यहाँ पर राघवेंद्र जी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी हमारे साथ बने रहने के लिए टुडे, एंड फॉर शेयरिंग ऑल दोज व्यू पॉइंट्स ऑन ऑल द क्वेरीज दैट वर आस्क्ड बाय आवर व्यूअर्स टुडे। Thank you so much. All right, viewers, time to wrap up Daily Calls edition. I hope that we could answer as many questions as we could from all the list of questions that we keep on getting. For all those who couldn't get their questions answered, don't fret. We will come back next week. Again, Monday will be another day. 2 more guests will be there for answering all your questions. So keep sending your questions away on the WhatsApp number that we keep on flashing on your screens. Till that time, thanks a lot for watching in. Do stay tuned. A lot more market coverage coming in on the other side. Of course, I will be coming back for the closing edition at 3 p.m. So stay tuned for that too. मैं प्रधानमंत्री स्टार्मर के गर्मजोशी भरे स्वागत सत्कार